अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। और बेसिकली अभी तक हम चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्शन एक्ट का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। और इसके अंदर जो सेक्शंस हैं दे आर फ्रॉम 23 से लेकर 49 तक इसमें सेक्शन हैं, जो कि टोटल बनते हैं 27 सेक्शंस। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली जो है आपको सेक्शंस के नाम तो आने चाहिए कि कौन सा सेक्शन किस चीज़ के बारे में है। तो बेसिकली दिस इज अ चैप्टर अबाउट इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं, जो कि बेसिकली शीट्स होती हैं विच कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट अ वोटर, और इसके अंदर वोटर का नाम, उसकी पिक्चर, इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, सारे हलकों की। क्या उसको हम कहते हैं इलेक्टोरल रोल। तो इसके बारे में चैप्टर है, किस तरह से उसको बनाया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा बाय द इलेक्शन कमीशन। तो यही चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। So let's start our section number 23, preparation and computerization of electoral rolls. The Commission shall prepare the electoral rolls for election to the National Assembly, Provincial Assembly, and local governments, and shall revise such rolls periodically in prescribed manner. The Commission shall make arrangements for the computerization of electoral rolls in such manner as it may determine, and any printout from the database maintained by or with authority of the Commission shall be deemed to be an electoral roll published under this Act. Explanation देखते हैं सेक्शन 23 की। सेक्शन 23 defines responsibility and power of Election Commission of Pakistan for preparing and maintaining electoral rolls। ठीक है, प्रिपरेशन सबसे पहले सब क्लॉज में बात की गई प्रिपरेशन की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन preparing the electoral rolls for National Assembly, Provincial Assembly and local governments। याद रखिएगा ये। ठीक है, इसके अलावा जो इलेक्टोरल रोल्स हैं दे मस्ट बी रिवाइज पीरियोडिकली। ठीक है, यहाँ पर बताया गया पीरियोडिकली रिवाइज किए जाएंगे इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स एंड लॉज एंड रूल्स। इसके बाद सेकंड सब क्लॉज में बात की गई है कि उसकी कंप्यूटराइजेशन करनी है, जो कि इलेक्टोरल रोल्स बन जाएंगे। द ईसीबी इज रिक्वायर्ड टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर computerizing the electoral rolls in a manner it determines. Any print out from the official ECB electoral roll database से कोई भी जो प्रिंट आउट लिया जाएगा उसको इलेक्टोरल रोल ही कंसीडर किया जाएगा, will be considered an official electoral roll as if prescribed published under the Election Act। पर्पस इसका क्या है? इंश्योर अप टू डेट, एक्यूरेट एंड एक्सेसिबल वोटर लिस्ट। ठीक है, यूज टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस डुप्लीकेशन और फ्रॉड। तो बेसिकली कंप्यूटराइज क्यों किया जा रहा है? ताकि जो डुप्लीकेशन है किसी की वो कम हो सके, क्योंकि वी नो के हम कंप्यूटराइज जब कोई चीज होती है, पीडीएफ फाइल होती है या इस तरह से, तो इट इज इजी फॉर अस टू सर्च इनसाइड दैट एज कम्पेयर टू कि हमारे पास कोई हार्ड फॉर्म में चीज है तो उसमें सर्च करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पीडीएफ फाइल में हम सर्च कर सकते हैं उसको इजीली। MCQs which could be important from exam point of view. Question number 1, who is responsible for preparing electoral rolls for elections in Pakistan? तो कौन responsible है? Election Commission of Pakistan ECB। The electoral rolls prepared under section 23 are for नेशनल असेंबली के लिए भी हैं, प्रोविंशियल के लिए भी हैं और लोकल के लिए भी हैं। हाउ ऑफन मस्ट इलेक्टोरल रोल बी रिवाइज? तो पीरियोडिकली इनको रिवाइज किया जाना चाहिए इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। What does the section 23 require the ECB to do with electoral rolls? Computerize them. Any printout from ECB's electoral roll database shall be considered an electoral roll under this act। ठीक है, which law governs the preparation of electoral rolls? The Election Act 2017,
The computerization of electoral roll is aimed at improving transparency and preventing duplication. The manner of periodic revision of electoral roll is prescribed under Election Act and rules. Which technology is the related step in specifically mentioned in Section 23, computerization of electoral rolls? Under Section 23, who determines the method of computerizing electoral rolls? Election Commission of Pakistan. So this was about Section 23. Now let's continue with Section 24, appointment of registration officer. अब कंप्यूटराइजेशन हो गई, इलेक्टोरल रोल्स की प्रिपरेशन हो गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर. जो इलेक्शन कमीशन है shall appoint the registration officer for an electoral area or group of electoral areas for the purpose of preparation, revision, correction, and amendment of electoral rolls, and may, for that purpose, print out as many assistant registration officers as may be necessary, subject to such prior permission or instructions as may be given in this behalf by the Commission. An assistant registration officer may, under the control of the registration officer, perform functions of the registration officer, and registration officer may require any official to assist him in performance of his functions. Explanation देखते हैं इसकी. Section 24 deals with the appointment and role of registration officer and assistant registration officer for electoral roles. अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, और एक इलेक्टोरल एरिया के लिए या ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल एरियाज के लिए भी कर सकता है. इसी तरह उसका जो काम है वो क्या है? प्रिपेयरिंग, रिवाइजिंग, करेक्शन एंड अमेंडमेंट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. तो ये उसके 4 काम होंगे. अपॉइंटमेंट होगी, उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की, जो कि एज मैनी एज नीडेड, जितनों की जरूरत होगी उतनों को अपॉइंट किया जा सकता है एक इलेक्टोरल एरिया में. अब रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को पावर दी गई है कि बेसिकली असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की बात हो रही है कि ही विल परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ही कंट्रोल में होगा, लेकिन उसी के फंक्शन, उसी की ड्यूटीज कर रहा होगा. और इसके लिए एक प्रायर परमिशन चाहिए होगी ईसीबी की तरफ से. इसी तरह जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो अगर चाहे कि कोई भी ऑफिशियल उसको असिस्ट करे उसकी ड्यूटीज में, तो वो रिक्वायर कर सकता है, डिमांड कर सकता है. दिस सेक्शन ensures that ECB has a structured system for maintaining accurate voter list through designated officers. MCQs. Who appoints registration officer for an electoral area? So Election Commission of Pakistan appoints करता है. A registration officer can be appointed for an electoral area or group of electoral areas के लिए. What is the main function of registration officer? इसका main function क्या है registration officer का? To prepare, revise, correct and amend electoral roll. ठीक है. Who appoints registration officer? Assistant registration officer. तो इसको भी Election Commission of Pakistan ही appoint करता है. Can an assistant registration officer perform the functions of registration officer? So yes, but with the prior permission from ECB. Under whose control does an assistant registration officer work? The registration officer के control के में वो काम करता है. Who can a registration officer required to assist him? Any official. The requirement for prior permission before an assistant registration officer performs registration officer's duties is given by Election Commission of Pakistan. Which of the following is not function of registration officer? उसका क्या function नहीं है? Preparation of electoral roll है, correction है उसकी, amendment है, announcement of polling schedule ये नहीं है. Why can Election Commission of Pakistan appoint multiple assistant registration officers to assist registration officer in an electoral roll work? Okay, so as many as required जो है वो assistant registration officers appoint किए जाते हैं. Section 5 we have NADRA to transmit data. National Database
and registration authority to transmit data in such manner as may be prescribed. The National Database and Registration Authority shall transmit relevant data of every fresh national identity card issued by it to the Commission for registration of the card holder as a voter in the electoral roll of electoral area in which his permanent or temporary address is located in accordance with the option indicated by him in the application for issuance of national identity card. The authority shall also transmit to the Commission relevant data of every cancelled or modified national identity card, information regarding the deceased voters, and such other details as may be required by the Commission for purpose of this Act. The Commission shall forward the data referred to it uh, to in subsection 1 and 2 to the registration officer concerned, who shall take steps for enrollment or, as the case may be, correction in relevant electoral roll in accordance with such procedure as may be prescribed. Explanation इसकी क्या है? A fresh national identity card include any card that has not been earlier made part of electoral roll database due to any reason whatsoever. And subsection 4 is notwithstanding anything contained in section 28 of National Database and Registration Authority Ordinance 2000, any authority to whom an application for registration is to be made under National Database and Registration Authority Ordinance 2000 shall, on request of the registration officer, furnish him such information, including extracts from said application, as may be necessary for the purpose of this act. इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो सबसे पहले इसका पर्पस क्या है. Section 25 explains how NADRA and Election Commission of Pakistan coordinate to keep electoral rolls updated using national identity card data. इसमें सबसे पहले सब क्लॉज में बात की गई data transmission of new national identity card holders. NADRA must send relevant data of every fresh NIC issued to ECP. A voter will be registered in electoral roll of the area corresponding to their permanent or temporary address as chosen in their NIC application. Data of cancelled or modified or deceased voters. NADRA must also send details of cancelled or modified NICs, information about deceased voters, any other details requested by ECB. Action by registration officer. क्या action लेगा registration officer? ECB forwards NADRA's data to the registration officer of the relevant area. The registration officer updates, corrects, or enrolls the voter in electoral roll as prescribed. ठीक है, अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की जो है वो ड्यूटीज आ गई हैं या उसके एक्शंस आ गए हैं कि अब वो क्या करेगा. वो फॉरवर्ड कर देगा नादरा के डाटा को. बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है दैट विल फॉरवर्ड द नादरा डाटा टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर. अब वो उसको करेक्ट करेगा, इनरोल करेगा उस वोटर को. ठीक है, अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है इलेक्टोरल रोल में तो वो कर देगा. डेफिनेशन ऑफ फ्रेश एनआईसी. क्या डेफिनेशन है कि वो वाला एनआईसी जो कि इससे पहले इलेक्टोरल रोल डेटाबेस में शामिल नहीं था, चाहे वो पहले का बना हुआ था, लेकिन इट विल बी अ फ्रेश एनआईसी. एक्सेस टू नादरा रिकॉर्ड्स. ठीक है, डिस्पाइट सेक्शन 28 ऑफ नादरा ऑर्डिनेंस 2000, any NADRA registration office must, on the request of the registration officer, provide relevant extracts of or information from NIC application for election purposes. ठीक है, तो बेसिकली नादरा का जो ऑर्डिनेंस है 2000 उसका सेक्शन 28 कहता है कि किसी का भी डाटा जो है वो किसी को नहीं दिया जाएगा. लेकिन जहां इस
सेक्शन की जो पावर है वो उससे ज्यादा है। ये बताया गया कि अगर जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रिक्वायर करता है नादरा के किसी भी ऑफिसर से डाटा या किसी भी ऑफिस से डाटा, तो नादरा विल प्रोवाइड दैट डाटा अबाउट फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। So let's see some MCQs जो कि important है for exam point of view from section 25. Question number 1. Which authority is responsible for transmitting NIC data to ECB for voter registration? NADRA is responsible. In which electoral roll is a new NIC holder registered in either permanent or temporary address as chosen? Who chooses whether the voter is registered at permanent or temporary address? The applicant जो है वो खुद choose करेगा. Which of the following is not included in the data नादरा सेंड्स टू ईसीबी? तो क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं? कैंसल्ड एनआईसी डिटेल्स भी होंगी, ठीक है, मॉडिफाइड होंगी, डिसीज्ड होंगी, ठीक है, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट समरीज नहीं होंगी. What happens after ECB receives Nadra's voter data? So the registration officer had that will he will update electoral rolls. It is sent to registration officer for updating electoral rolls. Who updates or corrects the electoral roll based on Nadra's data? तो कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेगा. Fresh, fresh national identity card refers to any NIC not included in electoral roll database. Under Section 25, Nadra must share voter-related details periodically as prescribed. Which law normally restricts Nadra from sharing NIC application data? तो ये हमने देखा सेक्शन 28 ऑफ नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2000. ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, ये याद रखिएगा. डिस्पाइट सेक्शन 28 ऑफ नादरा ऑर्डिनेंस, हु कैन रिक्वेस्ट द वोटर डाटा फ्रॉम नादरा ऑफिसेस? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो डिमांड कर सकता है. नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 26 अबाउट प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स. ठीक है, प्रीलिमिनरी मींस कि वो वाले इलेक्टोरल रोल जो कि फाइनल नहीं होंगे, सिर्फ एक लिस्ट बनाई जाएगी इलेक्टोरल रोल्स की, ताकि अगर उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह हैं तो बाद में करेक्ट कर दी जाए, जिसको हम फर्स्ट कॉपी भी कह सकते हैं. सबसेक्शन 1 इसका है, सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कमीशन. The registration officer shall prepare electoral rolls by including including in the electoral rolls the name of the every person entitled to be enrolled as a voter in the electoral area under this act. A person shall be entitled to be enrolled as a voter in the electoral area if is a citizen of Pakistan, is not less than 18 years of age, possesses a NIC issued by Nadra at any time till the last day fixed for inviting claims, objections, and applications for preparing revision or correction of electoral rolls, is not declared by a competent court to be of unsound mind, and is or is deemed under section 27 to be resident in electoral area. ठीक है, तो यहाँ से एक चीज भी याद रखिएगा कि सेक्शन 27 is about the residents of electoral area, जो कि आगे हम देखेंगे फर्दर. सो एक्सप्लेनेशन इसमें क्या है? The NIC card issued by National Database and Registration Authority shall be deemed to be valid for purpose of registration as a voter or for casting votes in an election, notwithstanding the expiry of its validity period. Explanation देखते हैं इसकी.
तो द पर्पस क्या है इस सेक्शन का? सेक्शन 26 outlines how preliminary electoral rolls are prepared and who is eligible to be included as a voter. Authority कौन होगी इन चार्ज इसकी? The registration officer under the supervision and control of Election Commission of Pakistan prepares the electoral rolls. तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो सुपरविजन में ईसीबी की इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया, इसमें 5 पॉइंट्स बताए गए इसमें कि एक तो वो सिटीजन हो पाकिस्तान का, दूसरा वो 18 ईयर से ज्यादा हो, तीसरे नंबर पर उसके पास नेशनल आईडी कार्ड हो, ठीक है, और वो तब तक जो है होना चाहिए बेसिकली अगर वो चाहे कि वो अपनी क्लेम्स कर सके, ऑब्जेक्शंस कर सके इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद अ, उसको अनसाउंड माइंड ना डिक्लेयर किया गया हो बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, और लास्टली ही शुड बी अ रेजिडेंट इन द इलेक्टोरल एरिया, जो इलेक्टोरल एरिया है उसका रेजिडेंट होना चाहिए। एक्सपायर्ड एनआईसी की बात की गई फिर कि इवन इफ द नेशनल आईडी कार्ड वैलिडिटी पीरियड हैज एक्सपायर्ड, मतलब कि किसी का आईडी कार्ड जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका है, वो फिर भी वैलिड है और वो वोट कास्ट कर सकता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें क्या हो सकते हैं? हु इज रिस्पांसिबल फॉर प्रिपेयरिंग प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स, कौन रिस्पांसिबल है? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है। द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ईसीबी। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर? 18 years. Which of the following is not a requirement for voter registration? कौन सी इनमें से रिक्वायरमेंट नहीं है? सिटीजनशिप होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए, ये भी है। रिवाइजिंग रेजिडेंसी होनी चाहिए इन इलेक्टोरल एरिया, ये भी है। हैविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये जो है ये एक रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, by what time must a person have obtained their NIC to be eligible for inclusion in the electoral roll? तो कब तक जो है उसको एनआईसी मिल जाना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन? बिफोर द लास्ट डे ऑफ फिलिंग क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस, ठीक है। अगर उसका इलेक्टोरल एरिया में नाम नहीं है इलेक्टोरल रोल में, तो उसको तब तक सीएनआई से अगर मिल जाता है कि वो ऑब्जेक्शन फिल कर सके, और ऑब्जेक्शन फिल करने के भी जो है वो डेडलाइन चल रही है, तो उसके पास अगर आ जाए तो फिर ऑब्जेक्शन फिल कर ले और अपना नाम ऐड करवा ले। Who determines if a person is of unsound mind for voter eligibility purposes? ठीक है, कौन determine करता है? Competent court. A voter is considered a resident of an electoral area based on section 27 provisions. तो ये इस तरह से एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन है। Can an expired NIC be used for a voter registration? Yes. Can an expired NIC be used for vote casting? Yes. Under section 26, a person's NIC must be issued by NADRA. So our section 27 is about place of residence, जिसके बारे में हमने पीछे भी देखा। Save as otherwise provided in this section, a person shall be deemed to be resident in the electoral area if his temporary or permanent address in the national ID card issued by the National Database and Registration Authority lies in the set electoral area. Yeah. A person who is in the service of Pakistan may apply to the registration officer for enrollment in the electoral area in which he temporarily resides for being in service of Pakistan. The spouse and children of the person in the service of Pakistan may apply to the registration officer for enrollment in the electoral area in which such person is enrolled under subsection 2. Notwithstanding anything contained in this section or any other provision of this chapter, the registration officer of the voter had an address other than the permanent or temporary address mentioned in this in his national ID card remain valid till he applies for transfer of his vote or for modification or renewal of his ID card, in which
case, his vote shall be registered according to the temporary or permanent address mentioned in national ID card, provided that this subsection for including this provision shall stand omitted on December 31st, 2018. ठीक है, अब सेक्शन 27 से कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, सॉरी उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सेक्शन 27 की। Section 27 defines how a person's place of residence is determined for voter registration. ठीक है, सब सेक्शन में बात की गई एक जनरल रूल की कि a person is registered a resident in an electoral area if the permanent or temporary address on NIC issued by NADRA lies within the electoral area. ठीक है, सबसे पहले तो ये बात की गई है कि अगर किसी का जो परमानेंट या टेम्परेरी एड्रेस है वो लाई करता है इलेक्टोरल एरिया में, तो उसको उस एरिया में रजिस्टर्ड किया जाएगा। सेकंड सब क्लॉज या सेकंड सब सेक्शन जो है दैट इज के स्पेशल प्रोविजन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स के जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, a person in the service of Pakistan can request the registration officer to enroll them in the electoral area where they are temporarily residing due to their service. वो जिस जगह पर जो है वो रह रहे हैं ड्यू टू उनकी ड्यूटीज की वजह से, उनके जॉब की वजह से, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को उनका जो है वो इलेक्टोरल एरिया वो चेंज कर दिया जाए, तो वो कर दिया जाए। इसी तरह जो उनकी फैमिलीज हैं, मतलब जिसमें उनके वाइफ और चिल्ड्रन आ जाते हैं, अगर वो भी अपना इलेक्टोरल एरिया चेंज करना चाहें अपने फादर के एरिया में जहां पर वो जॉब कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। और लास्टली जो है सब सेक्शन 4 में बात की गई स्पेशल रूल्स फॉर एड्रेस अदर देन एनआईसी एड्रेस। अ वोटर कैन बी रजिस्टर्ड एट एन एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम देयर एनआईसी। ठीक है, अगर जो है वोटर रजिस्टर करवाना चाहे किसी और एड्रेस में, तो वो करवा सकता है। ये रजिस्ट्रेशन तब तक वैलिड रहेगी जब तक जो है वोटर दोबारा से वोट ट्रांसफर नहीं करवा लेता या मॉडिफाई नहीं कर लेता अपना एनआईसी को। ठीक है, आफ्टर दैट द वोट इज रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड एनआईसी एड्रेस। उसके बाद जो वोट वोट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज एनआईसी। और लास्टली बात की गई कि दिस सब सेक्शन एक्सपायर्ड ऑन 31st December 2018। तो ये जो सब सेक्शन है ये एक्सपायर्ड हो गया 31st December 2018 को, उसके बाद ये वैलिड नहीं है। एमसीक्यूज देखते हैं जो कि सब सेक्शन 27 से इंपॉर्टेंट आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडर सेक्शन 27 अ पर्सन्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन इज डिटरमिन्ड बाय द एड्रेस ऑन देयर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। उसके जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर एड्रेस होगा वो डिटरमिन करेगा। whose addresses are considered for determining an electoral area, either permanent address या temporary address. The NIC used to determine the place of residence must be issued by कौन issue करेगा? नादरा। Who can apply to be enrolled in the area where they are temporarily residing due to service? तो गवर्नमेंट सर्विस जो है या अ पर्सन इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान वो अप्लाई कर सकता है। Who else? तो जो उसकी फैमिली में से आ जाते हैं, उसकी स्पाउस और उसके बच्चे, उसके चिल्ड्रन, वो कर सकते हैं। Which official is approached for enrollment in new electoral area under section 27? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अप्रोच किया जाएगा। Before 31st December 2018, a voter could register at an address other than their NIC address until they are transferred their vote or updated NIC. After modifying renewing NIC, the voter's address for registration is
बेस्ड ऑन, इसके ऊपर बेस करेगा द अपडेटेड एनआईसी एड्रेस के ऊपर। द स्पेशल रोल अलाउइंग रजिस्ट्रेशन एट डिफरेंट एड्रेस एक्सपायर्ड ऑन, कब एक्सपायर हो गया? 31 दिसंबर 2018 को। The term service of Pakistan in section 27 generally refers to government service। उसके बाद आ जाती है, अब हमारा इलेक्टोरल रोल जो है वो प्रीलिमिनरी तौर पर तैयार हो गया है, तो अब उसकी एक प्रीलिमिनरी पब्लिकेशन होगी। ठीक है, तो जो प्रीलिमिनरी पब्लिकेशन है सेक्शन 28, दैट इज अबाउट द प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 26 together with a notice inviting claims, objections, and applications for correction, if any, with respect thereto, shall be published and displayed by the registration officer for a period not less than 30 days in such manner and form as may be prescribed। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो सेक्शन 26 जो है वो इंश्योर कर रहा है कि प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो पब्लिश किए जाएंगे और उनको पब्लिश किया जाएगा, so citizens can verify their information before finalization, ताकि जो है फाइनलाइज करने से पहले, फाइनल पब्लिकेशन से पहले जो सिटीजन्स हैं वो वेरीफाई कर लें अपनी इंफॉर्मेशन को। तो सबसेक्शन 1 जो है इसका वो बता रहा है कि द इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 26 मस्ट बी पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, जो इलेक्टोरल रोल हमने देखा जो प्रिपेयर किया गया था सेक्शन 26 में, अब उसको पब्लिश करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, इसके साथ क्या और चीजें पब्लिश की जाएंगी? द पब्लिकेशन मस्ट इंक्लूड अ नोटिस, इसके अंदर एक नोटिस होगा जो कि इनवाइट करेगा लोगों को क्लेम करें कि अपना नाम इंक्लूड करवाने के लिए, अगर उनके कोई ऑब्जेक्शन है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट करवा लें और एप्लीकेशन दे दें वो कोई भी फिक्स हो एरर फिक्स करने के लिए। मिनिमम डिस्प्ले पीरियड इसका कितना होगा? मिनिमम जो है वो 30 डेज होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड फॉर्म, द procedure, format and method of the display are to be determined by rules prescribed under the act। MCQs देखते हैं। Under section 28 preliminary electoral rolls are prepared under which section? The answer is section 26, क्योंकि हमने सेक्शन 26 में देखा था कि प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल बन रहे थे, उसकी बेसिकली हेडिंग ही है थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। Who is responsible for publishing the preliminary electoral rolls? The registration officer responsible है। The publication of preliminary electoral rolls must include a notice inviting claims, objections, and applications for correction। What is the minimum display period for preliminary electoral rolls? So याद रखिएगा, this is 30 days। The manner and form of displaying the electoral rolls are prescribed by rules। Claims in the context of preliminary electoral rolls means request to add a missing name। Objections in the context of preliminary electoral roll means request to remove a wrongly included name। Correction in the electoral rolls refer to correcting voter details। Which authority prescribes the manner and form of publishing electoral roll? Election Commission of Pakistan। The preliminary electoral roll must be published for at least 30 days। Section 29 अपॉइंटमेंट ऑफ रिवाइजिंग अथॉरिटी। ठीक है, अब प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल बन गए, उसके साथ उन्होंने क्लेम्स वगैरह इनवाइट करने के लिए वो भी उन्होंने कहा कि कोई किसी का क्लेम है, ऑब्जेक्शन है, तो वो हमें बता सकता है। अब नेक्स्ट जो है वो रिवाइजिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी।
The Election Commission of Pakistan shall appoint a revising authority for any electoral area or group of electoral areas for the purpose of receiving and deciding claims. ठीक है, आप ये रिसीव करेंगे claims को और decide करेंगे objections and application for correction of preliminary electoral law. Explanation इसमें बताई जा रही है. The section 29 ensures that there is a proper authority to receive and decide on claims, objections, and correction regarding preliminary electoral laws before they are finalized. Appointment by Commission. The Election Commission of Pakistan is responsible for appointing the revising authority. ठीक है, ये हमने देख लिया. Jurisdiction. The revising authority may be appointed for one electoral area or group of electoral areas. अब इनका क्या फंक्शन है इनके? Receiving claims, receiving objections, receiving applications for correction of voter details, or deciding on these matters before electoral roll is finalized. Who appoints the revising authority? इसी पे खुद करता है. The revising authority is appointed for an electoral area or group of electoral areas, which is not a function of revising authority. Deciding claims is a function, deciding objections, deciding correction application, conducting election campaign ये नहीं है उसका function. Claims handled by revising authority refers to request for adding missing names. ठीक है. Objections handled by the revising authority refers or means removing wrongly included names. ठीक है. And application for correction to the electoral roll may include changing a voter's name spelling. A revising authority operates at which stage of electoral area process? During preliminary electoral roll review. The appointment of revising authority is for ensuring accurate and error-free electoral rolls. The revising authority's power is given under which section of Election Act 2017, Section 29. Which body supervises the work of revising authority? Election Commission of Pakistan खुद supervise करता है. Next we have Section 30. That is about period for lodging claims and objections. ठीक है. अब एक टाइम पीरियड जो है वो दिया जाएगा कि लोग अपनी क्लेम्स को सबमिट करवा दें, ऑब्जेक्शंस को सबमिट करवाएं. Any person may file an application for inclusion of a name in the electoral roll or objection or application for correction of the entry of any entry in the preliminary electoral rolls before revising authority on prescribed form within a period of 30 days or more. ठीक है, मिनिमम जो है वो 30 days होगा और इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये पीछे भी हमने पढ़ा. As may be determined by the commission. Next, following the date of publication of preliminary electoral rolls under Section 28. The revising authority shall reject any claim or objection or application for correction or transfer if it is not made within the period. अगर जो है वो during the time period नहीं आई किसी की complaint, किसी का claim वगैरह, तो revising authority उसको reject कर देगी. Or is not made in the prescribed manner. इसका क्या पर्पस था सेक्शन का? सेक्शन 30 defines the time limit and procedure for submitting claims, objections, and corrections. Any person can submit claim, objection, and correction. ठीक है. टाइम लिमिट दे दी गई within 30 days or more. Exact period decide कौन करेगा? इसी पे खुद. After publication of electoral laws under Section 28. Submission requirements क्या हैं? Must be submitted to revising authority, must be in the prescribed form, must be submitted within allowed time. Rejection of candidates after the deadline is not in prescribed manner. So questions देखते हैं. Under Section 30, who can file a claim, objection, or correction application? Any person. What is the minimum period given for filing claims and objections after publication of preliminary rolls? 30 days. The time period for lodging complaints
and objection is counted from the date of publication of preliminary electoral rolls. The exact duration of filing claims and objections is determined by ECP. Where should claims, objections, and correction application be submitted? Revising authority को. A claim in this context refers to request for inclusion of name in electoral area, which is valid example of objection under section 30. Requesting to remove a voter who is deceased, which is not a valid reason for rejection of claim or objection under section 30. Filed in prescribed time and form. Claims and objections must be made in writing on the prescribed form. If the application is late or is not in the prescribed form, the revising authority will reject it. तो यहाँ तक हमने किए section 23 से लेकर 30 तक. Next we have section 31, that is transfer of name from one electoral area to another. ठीक है. अब अगर कोई पर्सन अपना नाम ट्रांसफर करवाना चाहे एक इलेक्टोरल एरिया से दूसरे में, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो इसमें बता दिया गया. A person may apply for transfer of his name from one electoral area to electoral area of another electoral area with the appropriate revising authority if it is preferred before the final publication of the electoral roll under section 35, or if it is filed after such final publication with appropriate registration officer under section 37 by filing an appropriate an application in the prescribed form for the inclusion of his name in the electoral roll of an electoral area where he is resident and wishes to enroll himself as voter in with the request to delete his name from the electoral roll in which his name is currently enrolled. Section 31 provides the procedure for shifting voters registration from one electoral area to another. कौन अप्लाई कर सकता है? Any person whose name is already in the electoral roll. Where to apply? कहाँ अप्लाई करेगा? Before the final publication. फाइनल पब्लिकेशन जो है वो सेक्शन 35 में उसके बारे में बात की गई है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. अप्लाई टू रिवाइजिंग अथॉरिटी. ठीक है, रिवाइजिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेगा फाइनल पब्लिकेशन से पहले, और अगर फाइनल पब्लिकेशन हो गई है ऑफ द इलेक्टोरल रोल तो तब वो करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अंडर सेक्शन 37, सेक्शन 37 के अंडर. सो दिस इज इम्पोर्टेंट, इसमें याद रखनी है आपने कि आफ्टर फाइनल पब्लिकेशन किसको अप्लाई करेगा और बिफोर किसको करेगा. और जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, वो मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर. ठीक है, must request inclusion of name in the electoral roll of the new electoral area where the person is resident and deletion of the name from the old electoral roll. The electoral area must be the place where the applicant is resident. ये इसमें condition है and wishes to vote. MCQs under section 31. A voter may apply for transfer of name from one electoral area to another if they change their residence. ठीक है, अगर वो अपना रेजिडेंस चेंज करे तो वो अप्लाई कर सकते हैं. Before the final publication of electoral rolls, an application for transfer is submitted to. फाइनल पब्लिकेशन से पहले रिवाइजिंग अथॉरिटी को की जाएगी और आफ्टर फाइनल पब्लिकेशन विच इज द नेक्स्ट MCQ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को की जाएगी. फाइनल पब्लिकेशन किस सेक्शन में बात की जा रही है? सेक्शन 35 में. An application for transfer must be made in the prescribed form after along with the inclusion of new electoral roll. The application
the applicant must request deletion of name from the old electoral roll. The new electoral roll must be area where the new electoral roll must be the area where the applicant is resident. Okay? If the if the voter applies for transfer after the final application, the correct authority is, ठीक है. तो अगर वो आफ्टर फाइनल पब्लिकेशन के बाद करता है तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो करेक्ट अथॉरिटी होगा. Which document proves residency of the electoral transfer purposes? The NIC. The section dealing with the transfer of voter name between electoral areas is, तो कौन सा section है? Section 31. So this was about section chapter number 4. ये आज हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया. बेसिकली इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, विच मीन्स के इसके फर्दर 2 लेक्चर्स और होंगे. ठीक है, आज हमने इसके 9 सेक्शंस किए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 23 से 31 तक. ठीक है, कल भी हम इसके फर्दर 9 करेंगे और देख लेंगे अगर फर्दर हमने ज्यादा करने हुए तो वो भी देख लेंगे. ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये 3 दिनों में कंप्लीट होगा. दैट इज ऑल फॉर टुडे. आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क नाउ.